Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is V. Ravi Kumar and with me is my Hindi co-anchor Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ बाजार विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं वी रवि कुमार। Global stocks trade mixed amid investors' concern over China's zero COVID policy, and Brent crude price slips below $98 per barrel. चीन की जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर निवेशकों की चिंताओं के बीच वैश्विक शेयर बाजारों में मिला जुला कारोबार और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें फिसलकर $98 प्रति बैरल से नीचे आईं। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले बात वैश्विक शेयर बाजारों की। अमेरिकी शेयर बाजारों में तेजी और चीन में जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर निवेशकों की आशंकाओं के बीच एशियाई शेयर बाजारों में आज कारोबार मिला जुला रहा। जापान का निकेई 1.3% चढ़ा और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.2% की बढ़त में रहा। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.1% की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग 0.2% फिसल गया। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.4% के नुकसान में रहा। अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान यूरोपीय शेयर बाजारों में भी मिला जुला रुख रहा। समाचार लिखे जाने तक जर्मनी के डेक्स में 0.3% की तेजी थी, जबकि फ्रांस का कैक और लंदन का FTSE 100 दोनों 0.2% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। And we are now joined by market expert Shishir Sinha to discuss the stories of the day. Shishir, welcome to Market Mantra. Thank you. Shishir, the Asian shares today traded mixed amid gains in US stocks. So US stocks are looking at the midterm elections that are happening right now in US as we speak. So what are the factors which are impinging on the Asian markets? Because most of them were kind of mixed today. Shishir? I think we seem to have lost Shishir. We'll get in touch with Shishir again to discuss the Asian markets and the impact. While we were talking about the Asian markets, one of the reasons, Vishal, for the impact on the Asian markets is the US stocks. And what's happening in the US today is what we call the midterm elections. And the midterm elections are important because you have the House of Representatives, which is like the Lok Sabha, and the Senate, which is like the Rajya Sabha, where the House of Representatives, which is like the Lok Sabha, the Democrats have a clear edge there. They need at least 218. They currently have 220. But in the Senate, which is the equivalent of the Rajya Sabha here, it is 50-50. Both of them have equal number of seats, and the casting vote for a tiebreaker is with the Vice President Kamala Harris. So it's very close to call on that, and that will obviously have an impact on a lot of things that happen in the US. And as you know, a lot of things that happen in the US also have an impact on India, as we saw in the Asian markets, because the US stocks were up yesterday, and because of that, the Asian shares were also impacted. We seem to have got Shishir back online. Shishir, are you there with us? Yeah. So could you dwell upon the Asian markets? What do you see as the scenario for the Asian markets? Yeah, if you take some lessons from the if you take the Asian market, the Chinese market, we have seen now cluster-based production stoppage or cluster-based lockdown. That is affecting the entire Chinese economy. And that is also reflected in the Chinese stock market indices, especially I'm talking about the Shanghai indices. But if you talk exchanges like Korean or Japanese, we are not seeing that kind of production or that kind of sell in those markets. So that is why we are seeing some kind of sell-off. I think the Chinese market is very, very critical. And since the Chinese are very, the way they are going
towards COVID management, that is affecting the Asian market. Actually, Indian market is slightly not affected by Chinese development. As we all know that the fundamental economy has taken from the other economies. And this is why you are seeing more and more FDIs investment coming from the Indian market, which resulted in indices crossing, especially BSE Sensex crossing 61,000. जी शिशिर, यहाँ जानना चाहेंगे कि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर निवेशकों की जो आशंकाएं हैं उसके पीछे वजह क्या है? देखिए, अगर आप पूरे सप्लाई चेन की बात करें, वैश्विक सप्लाई चेन की बात करें, जो आपकी व्यवस्था है उसमें चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। और चीन में अगर मैन्युफैक्चरिंग अफेक्ट होता है, विनिर्माण पर असर पड़ता है, तो इसका मतलब है कि ग्लोबल सप्लाई अफेक्ट होगा। एक परिस्थिति ये है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यूरोप और अगर हम लोग ब्रिटेन की बात करें तो वहां पर मंदी की सुगबुगाहट है। अमेरिका में भी मंदी की सुगबुगाहट है। अगर हम खुल करके बात करें तो ब्रिटेन में तो कई बार ये लोग कहने लगे हैं कि मंदी पूरी तरह से आ चुकी है। तो एक तरफ चाइनीज जो जीरो कोविड पॉलिसी है उससे मैन्युफैक्चरिंग का होना, दूसरी तरफ ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन, और तीसरी तरफ यूरोप और ब्रिटेन में जो मंदी की सुगबुगाहट है। यह सब का मिला जुला असर यह है कि आप विश्व के अलग अलग बाजारों में अलग अलग परिस्थितियां देख रहे हैं। अगर ओवरऑल मैं सेंटिमेंट्स की बात करूं तो ओवरऑल सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जहां भी एक अपॉर्चुनिटी बन रही है विदेशी निवेशकों के लिए, वो वहां पैसा जरूर लगा है। जी, घरेलू बाजारों की बात करें तो इन सब परिस्थितियों से भारतीय जो बाजार है, शेयर बाजार हैं, वो अछूते रहे हैं इसके असर से अभी तक। और हम देख ही रहे हैं कि पिछले 2 सत्रों में लगातार तेजी रही है बाजारों में। अब भारतीय बाजार या घरेलू शेयर बाजारों का हम क्या आने वाले सप्ताहों में किस तरीके का अपवर्ड मूवमेंट फिर से जारी देखेंगे इसको? आप समय तक मेरा अपना अनुमान है, और जो अगर मैं कुछ वर्षों के ट्रेंड को देखूं, जैसे आपको बताना चाहूंगा नवंबर में और दिसंबर के पहले 10 दिन या 1 हफ्ते की बात करें तो एक तरीके से जो खरीदारी जो है विदेशी निवेशकों की बड़े पैमाने पर। I think we have a bad connection with Shishir. We'll try and reconnect with Shishir and discuss the domestic stock markets as well. But Vishal, if you look at the markets, there seems to be some confusion between the bulls and bears, and we don't seem to have clarity in terms of who will win the battle, because most of the today obviously the markets were closed, but yesterday we saw most of the buying coming in the last 90 minutes, and that kind of propped it up the market yesterday. But there are a lot of things that are lined up for the week ahead, and of course we have the US, which is a seminal influence on the markets worldwide, and a couple of things which are going to happen in the week ahead, the immediate week ahead. Meanwhile, we have Sharad Kohli, market expert, whom all our listeners are well aware of. Sharad, welcome to Market Mantra. Thank you so much, Ravi. Thank you for joining us. We were discussing the Asian markets, and Vishal was also talking about the zero COVID policy and what impact it could have on the Asian market, or the greater China region as we call it, and also the impinging effect of the US markets, because there are a lot of things happening in the week ahead. You have the corporate earnings, you have the midterm elections which are happening right now as we speak, and also the inflation data, the US CPI, which is expected to come in the week. How will all this affect the Asian market particularly? I think Asian markets are going to follow the toe line of the American markets. There is no doubt about it that Asian markets would, not follow the toe line. And as you rightly said, there is a lot happening, especially China. I mean, I am more worried about America and China, if you ask me, because China right now, is again witnessing a spike in the infections. So I think it is not compromising on the zero COVID policy. So what does that mean? That means that the economy, and let's not forget, China is the second biggest economy in the world. So when the second biggest economy, it's almost like heading for a lockdown. And we knew, we have very, very fond and bad memories of the lockdowns that we've seen in the past. And China is now getting affected very badly. So I think that will have an effect on the global demand. More importantly, it will have effect on the global supply chain, because we should not forget that China, as of now, although in a limited way now, is still the world's factory. There's a lot of manufacturing, a lot of export which happens from China. That is going to be impacted. And as far as America is concerned, as you rightly said, the inflation numbers, which has been bothering the American economy for so long, and this is one of the main issues in the midterm elections, in the Congress elections, if you're aware.
I think all the conversing which is going on is going around the fact that the inflation, the cost of living should come down. So I think the inflation numbers will decide how is Fed going to react in the times to come, and that in turn will define as to how the market is going to move from here. So therefore, a very, very crucial week, and I think the impact of the American and the Chinese market, I would put it in a different way. I would say the impact of the American markets and the impact of the Chinese economy. So these two will determine as to how the Asian markets move forward in the week to come. But one thing is for sure, which I would like to comment here, that Indian markets have been very resilient, and I think I must put on record a word of appreciation for the Indian markets, not because I'm an Indian, because, I'm a market analyst, and if I do global market analysis, I think Indian markets have shown phenomenal strength, and 18,200, in the time, we are almost in the kissing distance of the all-time high, which was 18,604, I'm talking 50. So I think Indian markets are poised for all-time high. They might hit 19,000 if subject to all going well. And we should not forget, Ravi, that the geopolitical factors, they are only cause of concern as far as I am concerned as an analyst. Because what's happening between North Korea and South Korea, what is happening between Iran and Saudi Arabia, what is happening between China and Taiwan, let's not forget Russia and Ukraine, which has been going on for so many months now, the threat of escalation, the threat of nuclear, all these words, and then the word recession. These are the concerns that I have, Ravi. Otherwise, Indian market, as of now, as we stand today, and a very interesting fact came out that the rupee gained, if you've noticed the rupee, right, come down below 82, which is a very good sign. This is a sign that the FPIs and the FIIs have turned positive. They have been investors in the country. They've been investing over the last several days, I would say, and I think about 15,000 crores has been already collected. So I think all that is good news, but the only threat to the market right now, as I said, are the geopolitical factors. I really feel, Ravi, that even the, the inflation, higher inflation rates, or, the American or the Chinese lockdown will not have as much impact. But if a geopolitical tension gets escalated, I think the market can take a jerk. Otherwise, there's nothing which can stop us from crossing the all-time high, Ravi. That's a very hopeful note. Thank you for putting that. A lot of listeners would like to listen to that. Let's quickly look at the US market, which we've been talking about almost since the beginning of the program. Wall Street ended sharply higher yesterday as investors focused on today's midterm elections that will determine control of Congress, while shares of Meta platforms jumped on a report of job cuts at the Facebook parent. The Nasdaq Composite gained 1.3%, S&P 500 rose 1%, and the Dow Jones Industrial Average Index added 0.9%. And this midterm elections, is it of any impact in India? Because the Senate is poised on a knife's edge, but the House of Representatives, that's the Congress, seems to have a clear Democrat advantage there. Would it impact India in any way, midterms, although generally speaking people look at midterms as an impact? Well, I think India is a very neutral, India is a very good friend of America. I don't think India is a friend of either Republicans or India's policy has been very neutral, and India, our Prime Minister, Shri Narendra Modi, was as friendly with Donald Trump, and he was warm enough with President Biden also. So I think for India, really, it doesn't matter whether it's Republicans or the Democrats. I think today, America needs India more than India needs America. So therefore, I really don't see any reason why, if there is a turnaround, let's say in the Congress, the Democrats go and the Republicans come. Well, I really don't think it should have an impact as far as Indian relations are concerned, and Indian market should remain quite neutral, although some of the policies, I think America has got its own domestic issues to resolve. Inflation is one, then the gun culture is another one. There are so many things which are impacting the American markets right now. I think they will be more bothered locally. As far as Indian markets are concerned, I think we should remain immune to whether it's Republicans or Democrats, Ravi. And if you look at the US market, there seem to be something that we call in economics as unintended consequences. The dollar strengthening and the 4 back-to-back 75 bips rate hikes that the Fed has given, which is equivalent to 300 basis points or 3 percentage points. So Japan has typically been a buyer of US Treasury bonds for a long time, and Japan generally has not intervened in its currency, its own currency, that is yen. And of late, Japan has been concerned about its own currency. So we are seeing a pullback in the Japanese demand for US bonds, and that is spurred by the weakening yen and the rising cost of borrowing dollars.
So how does this impact the entire dollars, inflation, and the international market as a whole? I think strength of dollar, if you ask me, vis-a-vis Japanese yen, that is going to remain because, let's not forget that Fed is quite neutral to whether it's Republicans or Democrats. I mean, it's an independent institution, and the way America is governed, as far as Fed is concerned, it doesn't matter. I mean, it has to go by economic policies. It is not to go strictly by politics. There may be a degree of politics in it, but I really don't think the Fed is going to be governed by Republican or Democrat policies. It will be purely governed by how the economy is behaving. So if you look at the dollar index, Ravi, we are looking at Canadian dollar, we are looking at euro, we are looking at yen, we are looking at British pound, we are looking at Swedish krona, we are looking at Swiss franc. If you look at these currencies, they have all been moving in tandem. The dollar index today stands at about 111, 112. Clearly indicates that, as far as the dollar is concerned, I think it's the dollar getting strong, not the currencies losing value. This is quite, evident from the Indian rupee. Indian rupee has gained from, as against the other currencies except dollar. So I think the Fed hike, if the inflation remains high, and let's say there is a turnaround in the American Parliament, the Congress, and the Republicans come back, I think Fed will still have to take steps to control inflation. I really don't think Fed has got a choice here. Or probably the Republicans can dominate Fed and probably direct Fed not to increase rates because, as I said, the economic policies would govern Fed decisions. And if the rates continue to rise, Ravi, I think the dollar is going to remain strong because the investors tend to pull money out from all these markets. I mean, as far as the Japanese markets are concerned, which you were particularly talking about, but even the European markets, the investors in America and other places, they have been pulling out money because they are getting about 4.5% to 5% interest on the investment from 30 days to 10-year bonds. They feel that let's not put money in the risky markets and let's try and park it domestically and let's try and park it in the safer markets, Ravi. जी शरद, वापस अगर हम घरेलू शेयर बाजारों की बात करें तो पिछले 2 कारोबारी सत्रों के दौरान अच्छी बढ़त देखने को मिली है और खासतौर पर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काफी अच्छी तेजी रही शेयरों में। आने वाले सप्ताह में अब या जो बाकी का जो कारोबारी सप्ताह बचा है उसमें आप बाजार की दिशा क्या देखते हैं? अब बाजार की दिशा मुझे लगता है विशाल के तय होगी। अमेरिका में जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आने हैं उससे थोड़ा हमें अंदाजा लगेगा। चाइना में जो घटनाएं घट रही हैं, अभी जो मैं रवि से बात कर रहा था, चाइना में जो घटनाएं घट रही हैं, चाइना में कोविड फिर से अपना मुंह पसार रहा है और 4-5 हजार इन्फेक्शन ऑफिशियली रिकॉर्ड हो रहे हैं। हालांकि मेरा ये मानना है कि नंबर ऑफ इन्फेक्शन से कहीं ज्यादा है और वो जीरो कोविड पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अगर ये जीरो कोविड पॉलिसी इतनी स्ट्रांगली अगर चाइनीज गवर्नमेंट उसको फॉलो करती रही तो उसकी वजह से चाइना दुनिया की सप्लाई चेन है। हमें भूलना नहीं चाहिए, पीछे जब लॉकडाउन हुआ था, आपको याद होगा भारत में भी था, तो शंघाई का पोर्ट एक महीने के लिए बंद रहा था। जी। इस वजह से दिल्ली की जो होलसेल मार्केट्स हैं, मैं खाली दिल्ली की बात करता हूं, सदर बाजार है, चांदनी चौक है, इन मार्केट्स में हलचल मच गई थी क्योंकि उनका जो 1 महीने का स्टॉक था वो खत्म हो गया था। तो मुझे लग रहा है चाइना में लॉकडाउन मार्केट को हिला सकता है अगर ये लॉकडाउन और बढ़ते हैं। एक फैक्टर है। दूसरा, अमेरिका में अगर इन्फ्लेशन के आंकड़े और ज्यादा आते हैं तो वहां पर अमेरिकन मार्केट्स एक दफे को झटका जरूर लेगा। हालांकि मैं ये मानता हूं कि भारतीय मार्केट्स पे उसका इम्पैक्ट एक आध दिन ही रहता है, हमने देखा है पीछे ये। उसके बाद भारतीय मार्केट वापस अपनी चाल चलने लगता है। तो भारतीय मार्केट का अभी जो मैं विशाल बात कर रहा था कि भारतीय मार्केट में जो स्ट्रेंथ दिखाई है वो बहुत काबिले तारीफ है, क्योंकि आप देखिए 18,200 पे आज हम खड़े हैं, 18,604 तो हमारा हाईएस्ट है। तो मैंने तो अभी जो मैं रवि से बात कर रहा था कि ये जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, अगर ये यहां से बदतर नहीं होती हैं, मतलब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में शांति बनी रहती है या रशिया यूक्रेन से कोई और नई ऐसी खबर नहीं आती है, चाइना ताइवान के बीच कोई ऐसी नई खबर नहीं आती है, ईरान सऊदी अरेबिया का संकट अगर शांत रहता है, इसमें कोई एस्केलेशन नहीं होती, तो मार्केट मुझे यहां से ऑल टाइम हाई अगर क्रॉस कर जाए विशाल, तो कोई हैरानी की बात मुझे नहीं होगी। अगर मार्केट 19,000 पे निफ्टी पहुंच जाए मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। सिर्फ एक ही फैक्टर है इस समय, जियोपॉलिटिकल। ये जो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अमेरिका के फेड रेट बढ़ेंगे, एक बार मार्केट थोड़ा सा झटका लेगा, उसके बाद फिर वापस आ जाता है। यही हो रहा है पीछे। आप कई हफ्तों का अगर रिकॉर्ड, मेरे पास सारा डेटा है, आप देखें थोड़ी देर के लिए मार्केट रिएक्ट करता है, 2 दिन 3 दिन, फिर उसको भुला के आगे चल पड़ता है, क्योंकि एक तो एफआईआई एफपीआई का पैसा लगातार आ रहा है, दूसरा हमारे डीआईआईज भी ऑन एंड ऑफ, उनको मैं देसी बॉयज बोलता हूं, भी पैसे निकालते रहते डालते रहते हैं। और बहुत बड़ा सेगमेंट इस समय विशाल हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स का है, जिनको बिल्कुल बेताबी रहती है कि कब मार्केट हमें मौका मिले अंदर घुसने का, और वो बिल्कुल पैसा जोर शोर से लगाते हैं।
इसकी वजह से आपको मार्केट में इस समय स्ट्रेंथ दिख रही है। और जैसा मैंने कहा कि अगर ये जियोपॉलिटिकल फैक्टर शांत रहते या जो अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेटस को रहता है, जैसी परिस्थिति है वैसी बनी रहती है, तो कोई कारण मुझे नहीं दिखता है विशाल के मार्केट अपने ऑल टाइम हाई 18,604 को पार नहीं करेगा। जी, घरेलू स्तर पर आने वाले सप्ताहों में इन्फ्लेशन का क्या आप सिनेरियो देखते हैं? किस तरीके से इन्फ्लेशन किस दिशा में बढ़ सकती है आगे? देखिए, अभी भारत सरकार ने रिजर्व बैंक से एक रिपोर्ट मांगी थी, या यूं कहिए कि रिजर्व बैंक को ड्यूटी होती है कि भारत सरकार जब पूछे तो उनको जवाब देना होता है कि क्या कारण है कि इन्फ्लेशन आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे, या यूं कहें कि इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। हालांकि आरबीआई ने उसका जवाब मुझे ऐसा जानकारी आई कि अभी कुछ दिया है, कुछ देना, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है, हमें आम जनता को ये नहीं पता लग पाता। पर उसका कारण ये है कि सप्लाई चेन डिसरप्शंस जो हैं, वो सप्लाई चेन डिसरप्शंस के कारण मुख्यतः ये महंगाई है। तो मुझे लग रहा है कि आरबीआई ने हालांकि रेट्स बढ़ाए हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत आपको अंतर दिख सकता है। 7.4 हमारी पिछले महीने की रिकॉर्डेड थी, हो सकता है उसके आसपास ही फिर आए। बहुत ज्यादा अंतर मुझे अभी उसमें नीचे की तरफ पड़ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस अभी भी $90-100 के बीच में घूमती रहती है। ऐसा नहीं है कि क्रूड 70-75 पे आ गया है। हमारी क्रूड ऑयल की प्राइसेस अभी ज्यादा हैं। उसके अलावा बाकी चीजों की कीमतें देखें, खाद्य पदार्थ हो गए, किसानों का सामान हो गया, फूड ग्रेन्स हो गए, अभी भी मौसम जो है अभी पूरा पलटा नहीं है। मौसम से संबंधित जितनी भी कीमतें बढ़ी थी उसमें अभी कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। तो मुझे लग रहा है ये धीरे धीरे करके नीचे आएगा। अंग्रेजी में कहावत है, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। दम से कंट्रोल में नहीं आ सकता, कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसमें आप महंगाई को एक महीने में 7.4 आए और दूसरे महीने आप सीधा उसको 4 कर दें। ऐसा संभव नहीं है। अगर आप जो लोग अर्थशास्त्र को समझते हैं, और भारत जैसे बड़े देश में 140 करोड़ की जहां आबादी है, भिन्न भिन्न राज्य हैं, उनकी अलग अलग पॉलिसीज हैं, इतनी बड़ी सप्लाई चेन है, इतना लंबा डिस्टेंस है, तो उन सबको देखते हुए मुझे लगता है ये आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आएगा। और आरबीआई ने इसको बोला है कि आने वाले वित्त वर्ष तक इसको हम 4-5% तक लाने की चेष्टा करेंगे। तो अभी बहुत बड़े बदलाव की तो मुझे, विशाल, अगर आपकी बात का मैं संक्षेप में जवाब दूं तो बहुत बड़े बदलाव की हम अभी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत जो पहले आया उसके ऊपर नीचे होगा, और उसके बाद फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स आता है, और हम देख रहे हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में और रिटेल सीपीआई में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, कभी कभी बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। तो ये फर्क भी हमारे जो श्रोता हैं उनको समझना होगा कि ये फर्क क्यों होता है, क्योंकि होलसेल में एक तो उसकी बास्केट अलग होती है और सीपीआई की बास्केट अलग होती है। दूसरा, होलसेल से सीपीआई तक आते आते वक्त लगता है उसका। अगर होलसेल नीचे आया है तो सीपीआई में नीचे आने में वक्त लगेगा, और हमने देखा पीछे होलसेल में कमी आई। हो सकता है आपको कुछ नीचे इस समय दिखाई दे, पर बहुत बड़ा अंतर मुझे, विशाल, अगर आपकी बात का बहुत ही संक्षेप में जवाब दूं, बहुत बड़ा अंतर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। And of course, one of the factors that impact inflation is oil, and oil prices today slipped as recession concerns and worsening COVID-19 outbreaks in top crude importer China heightened fears of lower fuel demand. In intraday trade, Brent crude was trading at $97.60 per barrel, while WTI crude prices were at $91.25 per barrel. We often use the term imported inflation, and I was looking at the data that US and its allies have planned major sanctions of Russian oil from 5th December. That's almost a month from now. How will this affect the world oil market and India particularly, because imported inflation is a large component as far as we are concerned? Well, I think if you look at the number of sanctions which US and Europe has imposed on Russia, I think I was counting the number of sanctions. They almost crossed 7,000-8,000. You know, if you go into small sanctions here and there, there have been massive sanctions of so many things. So I think these sanctions have become part and parcel of the global economy right as of today. So I think any additional sanction imposed by America on Russia may not have, a very, very serious impact. Take, for example, India, where the Indian External Affairs Minister, Mr. S. Jaishankar, has already, spoken his heart out. He says, and he's spoken the truth, that when you are buying, you wanted gas, you took it. When we want oil, why can't we take it? There could be a price cap which could be imposed, which might impact India to a certain extent, because it might say that, okay, you cannot buy below this or whatever, just to stabilize the global markets or not to let any particular zone in the world take advantage of. But I think India's policy towards Russia, India has been a long-standing friend of Russia, and India has taken a very neutral approach. I mean, diplomatically speaking, I think India has taken a perfect stand. And I think India is today gaining because of that. It is earning appreciation from Russia, where the Russian President Putin has spoken about not just the government, he's spoken about the people of India also. Yesterday he said people of India are very talented.
And as far as America is concerned, I think America has not changed its stance towards India. But I think going forward, as I said, Ravi, if the situation escalates from here, I think you always see realignment of these international equations. Therefore, the situation, to conclude, I would say the situation is very dynamic and it can change overnight. It all depends on how these geopolitical tensions escalate. What steps does Russia take now? I mean, whether the fearful word nuclear, whether it turns into reality in a mild form or in a full-blown form, I think all that will decide as to how things move forward. So I think we should all keep our fingers crossed and assume that probably situation will remain like this and things will not go too bad, because otherwise, whatever that I say right now, you could see the tables turning overnight and something else might come out of it, Ravi. Hopefully that turns out to be true, Sharad, because Russian crude is currently selling at a discount of more than $20 a barrel, and that if that is impacted, a lot of things will change in the equation as well. और अब बात कीमती धातु की। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,675.70 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी मामूली कमजोरी से $20.80 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। शरद जी, यहां आपसे जानना चाहेंगे कि सोने की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देख रहे हैं का एक गिरावट का रुख है और घरेलू स्तर पर भी 50,000 के आसपास के दायरे में सोना कारोबार कर रहा है। तो क्या अब निवेश का इस समय जो सोने की कीमतें कम है, निवेश का बहुत अच्छा समय है सोने में ये? जी हाँ, मैं आपके पहले बाद वाली बात का जवाब देता हूँ। बिल्कुल बहुत अच्छा समय है। मैं तो सोने का समर्थक रहा हूँ और अगर पिछले 10 साल का आप रिटर्न देखें तो मैं जो बात कह रहा हूँ उसको वाउच किया जा सकता है। और सोना मैं समझता हूँ जो आगे जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूँ कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखते हुए सोना एक बहुत अच्छा निवेश है लंबी अवधि के लिए। जो भी इसको लेना चाहता है, भले ही ये 50,000 के आसपास बहुत समय से घूम रहा है और रोज इसमें आपको 500-700 रुपए की ऊपर नीचे उतार चढ़ाव दिखते रहते हैं, पर जो असली निवेशक है, जो लंबी अवधि का निवेशक है, वो घबराए नहीं, क्योंकि ये सोने में स्पेकुलेशन बहुत होती है और सोना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पर लंबी अवधि से मेरा मतलब, अब वो मेरी अवधि छोटी हो गई है। पहले मैं 5 साल की बात करता था, आज मैं इसको 2 से 3 साल के लिए भी अगर कोई निवेश करके रखना चाहे, मेरा ऐसा मानना है कि उसको सोने पे बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। पर एक शर्त साथ में है। शर्त यह है कि बीच में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसको देख के वो घबराए नहीं। मैं तो एक कहावत यूज करता हूं विशाल, कि सोने के साथ सो जाइए। आप रेट को बार बार मत देखिए। बार बार देखेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं गलती तो नहीं करी। आप उसको 2 से 3 साल की अवधि के लिए रखें। ये भी मैं लंबा बता रहा हूं आपको, उससे पहले ही इसमें बहुत अच्छे भाव दिखने लग जाएंगे। बिल्कुल 10 से 15% हर किसी के पोर्टफोलियो में मैं मानता हूं कि सोने का निवेश जरूर होना चाहिए। Sharad, we looked at the bullion almost internationally hit a 3-week peak, and that was largely because the dollar became slightly weak at that point in time. But gold, we normally consider it as a hedge against inflation. But the problem is, if I am able to get 4.5% on a US Treasury, completely safe, world's strongest currency, and I can get that kind of return. In India, at least, sovereign gold bonds give you 2.5% extra, but generally you don't get anything extra on gold. So that becomes counterintuitive. So you have an opportunity cost which is rising because of the rising interest rates. So how do you think this will play out? There's no doubt about it. It is only because of the Fed rates and the strong dollar that we are seeing pressure on gold. Otherwise, gold, they would have probably touched 55,000. But I feel this is transitory. This is temporary. This is going to be over, and I think eventually gold will not look at all these factors. As I said, if the geopolitical tensions escalate, which to me, fingers crossed, it seems that at some point out of the 4 or 5 geographical locations I've spoken about, some place it is going to escalate. So then the gold is really going to ignore everything. Gold will ignore Fed rates. Gold will ignore dollar. It will shoot up. So I think for long term, I reiterate my point, you must keep gold in your portfolio. शरद कोहली जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, thank you. Thank you, Sharad, for joining us live from the Market Mantra team. A very big thank you to you. So that's all that we have in this edition of Market Mantra. But before we close this edition of Market Mantra, a reminder of the headlines that we covered in this edition. Global stocks trade mixed amid investors' concern over China's zero COVID policy. And Brent crude price slips below $98 per barrel. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.